1971 में पाकिस्तान से आज़ाद होने वाला मुल्क जितनी गुर्बत और जितनी मुश्किलात में आज़ाद हुआ था, आज अगर हम उसको देखते हैं तो बांग्लादेश बिल्कुल बदल चुका है। बांग्लादेश की अगर हम तरक्की की बात करें तो बहुत ज़्यादा तरक्की की है पिछले 10-20 सालों के अंदर। 1971 में जब आज़ाद हुआ तो लोग कहते थे कि ये कुछ साल बाद पाकिस्तान के साथ वापसी शामिल हो जाएगा। आज इंटरनेशनल मीडिया इसकी तारीफ कर रहा है और इंटरनेशनल मीडिया ये बात कर रहा है कि बांग्लादेश एशिया में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला मुल्क है। बांग्लादेश की अगर हम इकोनॉमी को देखते हैं तो सबसे ज्यादा तेजी से फास्टेस्ट इकोनॉमी बांग्लादेश की है। एशिया में चाइना और इंडिया को पीछे छोड़ने वाला मुल्क बांग्लादेश है। चाहे बांग्लादेश की टेक्सटाइल की इंडस्ट्री हो, चाहे वो मेडिसिन की इंडस्ट्री हो, चाहे वो अदर इंडस्ट्रीज हो, बांग्लादेश ने इसमें इतना तरक्की कर ली, इतनी आगे जा चुकी है बांग्लादेश की इकोनॉमी कि अब उसको बीट करना मुश्किल है। पाकिस्तान से आजाद होने वाला मुल्क पाकिस्तान को पीछे छोड़ चुका है। इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि भाई अचानक ये मुल्क कैसे तरक्की कर लिया। आज तक तो व्लॉगर्स वगैरह यहीं पे आके बांग्लादेश की तरक्की को दिखाते थे और कहते थे कि बांग्लादेश ने तरक्की की है। आज इंटरनेशनल मीडिया बांग्लादेश में आके बांग्लादेश की वीडियोस चला रही है, बांग्लादेश के पिक्चर्स चला रही है और कह रही है कि भाई पाकिस्तान से, इंडिया से, चाइना से ज्यादा तरक्की करने वाला मुल्क है। इनकी इकोनॉमी की ग्रोथ देखे तो इनकी इकोनॉमी की ग्रोथ सबसे आगे एशिया में। अगर किसी ने सही मानों में तरक्की एशिया में की है तो वह है बांग्लादेश। आइए आज की वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं और आपको बताते हैं इंटरनेशनल मीडिया इसके अलावा क्या बात करता है बांग्लादेश के बारे में और बांग्लादेश के आने वाले वक्त के और इकोनॉमी के बारे में क्या बात करती है। तो आइए पहले वीडियो देखते हैं, फिर आपके साथ बात करेंगे। It was a war that lasted just 9 months, but that killed approaching 3 million people and displaced nearly 10 million. At the partitioning of India, at the end of British rule in 1947, the country divided into India and both West and East Pakistan. Despite being apart, the two halves of Pakistan were governed from the West, but there were huge differences, notably the West speaking Urdu, the East Bengali. Tensions soon escalated as the East believed they were being exploited. At the end of 1970, elections were won overwhelmingly in the East by an East Pakistani party, the Awami League. The results, though, ignored by the West. On the 7th of March 1971, its leader gave a passionate speech seen as announcing a struggle for independence. Now the people of Bangla want freedom. The people of Bangla want to live. The people of Bangla want to have their rights. Well, there followed a violent crackdown. Operation Searchlight, launched by the West. The civil war had begun, sparking a huge refugee crisis. It wasn't until the end of the year that Pakistan ultimately conceded defeat, leading to the permanent liberation of Bangladesh. Well, since then, Bangladesh has seen remarkable change. Millions have been lifted out of poverty. It is one of Asia's fastest growing economies, thanks to, for example, its huge garment industry. But there remain huge challenges. Well, Leah Delfuli, Faisal Mahmood and Kanza Junaid revisit Bangladesh for France 24. In this building, located in the business district of the capital, Dhaka, Vidya Amrit Khan stares at photos of her father, Noor al-Qadir, who is regarded as the hero of Bangladesh's independence. My father, he started as, he was first in the Air Force. So that's a picture from when I think he was very, very young at the Air Force. And that's when the war started. Noor al-Qadir fought for independence against the Pakistani army. Once the conflict was over, he was appointed the top officer of the newly formed government struggling to build this new nation. He introduced a new industry in the country to overcome the financial burden of the 9-month-long war. In 1978, he launched Bangladesh's first garment factory, which laid the foundation for the country to become the garment hub of the world. My father, being a big patriot, he also wanted to give an industry to the country because we had our jute mills, which were nationalized, but which weren't working at the time. So as far as Bangladesh was concerned, we didn't have an industry. There was no place for employment of so many people to take place after war. And of course, we needed to do something to build the country. It was the start of Tesh Garments, now run by Vidya. After completing his studies in Europe,
she returned home and decided to carry on the legacy and vision of her father. In the nation's post-independence drive for economic development, the country has mostly relied on women's contribution. Of the 1,000 employees at Desh Garments, 65% are women. My father told me that he saw during the war so much atrocities against the women and children that he felt that he needed to, find a way for them. But Bangladesh was on the world map because of the garment industry. And these women were working and they found their independence because of the garment industry. A market worth over $55 billion makes Bangladesh the world's second largest textile exporter, trailing only behind China. The country currently has 4,500 garment factories, employing 4 million workers, with over half of them women. Among these workers is Rukia, who has been working at a factory in Dhaka for over 10 years. 6 days a week, she sews shirts for major European brands. Before, I used to just be a housewife, but now not only do I give money to help my family, I can also help my husband take care of my children financially. I have more respect now in society. She feels the textile industry has changed the lives of people in Bangladesh. Before, in Bangladesh, there were lots of shortages, even famine. People couldn't eat. They wore the same clothes all year round. Rukia lives just a few minutes' walk from her workplace. She now earns €230 a month. Her salary was raised after protests held a few months ago demanding better working conditions in the factories. A modest income, but one that now enables her to provide an education for her son. I want them to be doctors. In fact, there's no substitute for education. Education is a very important thing. It's indispensable. The country's economy has grown rapidly. Over 8 million Bangladeshis have been lifted out of poverty in the last 15 years. Politics and linguistic differences triggered the demand for an independent Bangladesh. Pakistan declared Urdu the official language, but Bangladesh, then East Pakistan, had a large Bengali-speaking population. That red sign over there says, Amar bhayer rokte rangano 21 February, ami ki bhulite pari. It's a line from a very famous song. Essentially it says, can I ever forget the blood of my brother? This place reminds me of that. तो आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। बांग्लादेश की तरक्की के बारे में आज इंटरनेशनल मीडिया उनकी तारीफ कर रहा है और कह रहा है कि 1971 में जब ये मुल्क आजाद हुआ तो लोग कहते थे कि ये मुल्क कुछ साल के बाद या कुछ अरसे के बाद वापसी पाकिस्तान के साथ या तो इंडिया के साथ मिल जाएगा। और वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि बांग्लादेश में काफी गुर्बत और काफी महंगाई थी। उस वक्त के लोग जो थे बिल्कुल गरीब थे, उनके पास खाने पीने के पैसे नहीं थे और ना ही मुल्क में रहने के पैसे थे। बांग्लादेश ने आहिस्ता आहिस्ता से तरक्की की और आज अगर हम बांग्लादेश को देखें तो पाकिस्तान, इंडिया और चाइना को पीछे छोड़ चुका है। इसकी अगर हम मिसाल आपको दें तो 2023 के जून से लेके 2023 के दिसंबर तक बांग्लादेश ने इतनी ज्यादा तरक्की की थी गारमेंट के सेक्टर में कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान, इंडिया को तो छोड़ ही दे, चाइना को भी गारमेंट के सेक्टर में पीछे छोड़ दिया और एशिया में सबसे नंबर 1 गारमेंट एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क बन गया था। बांग्लादेश ने इतनी तरक्की की है कि इनकी ग्रोथ परसेंटेज को बीट करना मुश्किल ही है, नामुमकिन है। चाहे वो पाकिस्तान बीट करे, चाहे वो इंडिया बीट करे। इंडिया के जो लोग कहते थे कि बांग्लादेश में गुर्बत है, बांग्लादेश ने ये किया, बांग्लादेश ने वो किया, आज इंडिया के खुद के लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश ने ज्यादा तरक्की की है, जिसमें मैंने कई सारी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर की थी और आप लोगों को बताया था कि पाकिस्तान से ज्यादा, इंडिया से ज्यादा और चाइना से ज्यादा तरक्की बांग्लादेश ने की है। बांग्लादेश की इकोनॉमी दिन ब दिन बढ़ती हुई जा रही है और बांग्लादेश की इकोनॉमी आगे जा रही है। बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने, बांग्लादेश की आर्मी ने, सब ने मिल के मुल्क को आगे की तरफ लेके गए हैं और सब ने मिल के ही काम किया है। बांग्लादेश को आज जो है वो इंटरनेशनल मीडिया उनकी तारीफ कर रहा है। तो इसी तरीके से और वीडियोस अगर आपने देखनी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।